Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas. Enough is enough. It's $20,635 in funds to support themselves in Canada that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week. It would be a mistake to blame international students for the housing crisis. तो हेलो भाई, राम राम सभी को। उम्मीद करता हूँ भाई सारे बढ़िया हो गए। भाई मैं भी बढ़िया एकदम। तो भाई IRCC वालों के कुछ नए रूल्स आए हैं कनाडा को लेके, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। ये कैसे आपको इम्पैक्ट करेंगे या क्या कुछ नए लॉज हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक जो रूल है वो ये है कि जो बच्चे फुल टाइम थे 38 दिसंबर 2023 तक, वो अब एक्सटेंड हो गया है 30 अप्रैल 2024 तक। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं कनाडा में जो अब सितंबर इनटेक में आए थे या उससे पहले आए थे, जो कि पार्ट टाइम थे, जस्ट लाइक मी, मतलब जैसे मैं यहाँ पार्ट टाइम था तो मैं 20 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता था, तो अब उन्होंने वो भी, उनकी भी लिमिट हटा दिया, तो हम सारे 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी जनवरी में आएंगे, जनवरी वाले भी 30 अप्रैल 2024 से पहले फुल टाइम काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी स्टूडेंट परमिट 7 दिसंबर 2023 से पहले अप्लाई करा हो तो फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो अब भाई इसका इम्पैक्ट क्या होएगा? इम्पैक्ट इसका सबसे पहले तो ये होगा कि भाई जो बच्चे जनवरी में आ रहे हैं उनको जॉब्स मिलने में भाई थोड़ा और डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि जितने भी मेजॉरिटी यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक्वायर कर लेंगे अपने एम्प्लॉयर को कह के कि वी आर नाउ फुल टाइम, और मैनेजर्स वगैरह भी सारे फुल टाइम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो दूसरा इन्होंने रूल निकाला है वो है GIC को लेके। जितने भी बच्चे 1 जनवरी 2024 से अपना कनाडा की फ़ाइल लगाएंगे तो भाई उनके लिए GIC की अब जो लिमिट है वो कर दी गई है $20,635, जिसका मतलब ये है कि आपको अपने इंडिया से आने से पहले जितने भी वो अपने अकाउंट्स में फंड्स शो करने पड़ेंगे, अराउंड $20,000, so that you can survive now in Canada for 6 to 7 months if you don't have any job. So guys, ये है सबसे दो मेन इम्पॉर्टेंट रूल्स। जो तीसरा निकल के आ रहा है वो है कि ये लोग अब वीज़ास लिमिट कर देंगे, वीज़ास की लिमिटेशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को काफ़ी लोग नेगेटिव उसमें दिखाएंगे कि अब कनाडा में आपका वो जो वीज़ा जो अप्रूवल है वो कम हो जाएगा। तो गाइज़ ऐसा नहीं है। जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे फ्रॉड कर रहे थे या जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वीज़ास दे रहे थे और यहाँ पे अकोमोडेशंस वगैरह की जो क्राइसिस हो रहे थे, तो उसकी वजह से जो इन्होंने ये जो स्टेप है वो लिया है, और जो कि ज़रूरी भी था अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स आते थे, कॉलेजेस अपना ऑफ़र लेटर दे देते थे, लेकिन यहाँ पे उनकी एक्चुअली इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी, और स्टूडेंट्स के करियर के साथ वो एक्चुअली मतलब एक तरीके का खिलवाड़ ही करते थे वो। तो अगर आप उनकी साइट में से जो उन्होंने गिवन करे हैं, जितने भी कॉलेजेस उनकी लिस्ट में हैं, तो अगर आप उनके थ्रू अप्लाई करते हो, मतलब उस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जो कि अकोमोडेशंस वगैरह में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके वीज़ा की जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगी। और बाकी मैं अभी इंटरव्यू डाल दूँगा, तो इंटरव्यू भी आप देख लेना, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिलर ने दिया था। और जो चौथी चीज़ है गाइस, वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अब जो पार्ट टाइम है, अगर 30 अप्रैल 2024 के बाद अगर इन्होंने पार्ट टाइम करा तो उसमें भी भाई 20 आवर्स की जगह 30 आवर्स तक लिमिट कर सकते हैं। अभी की नहीं है, और ये परमानेंट बेसिस पे अभी बात चल रही है। तो भाई अगर और कोई अपडेट चाहिए या अगर और कोई अपडेट आया तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी तब तक के लिए भाई बने रहो, स्टे ट्यून्ड। और यहाँ मैं इंटरव्यू अभी आगे दे रहा हूँ, सो डैट यू कैन हियर whole interview from the voice of Ministry of Education, including the development of a new framework to recognize learning institutions that provide top quality services and support, including housing to international students. It would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. It's why we expect learning institutions
to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house, or assist in finding off-campus housing. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. We also want to ensure that international students don't become victims of unscrupulous individuals who offer them inadequate living conditions, sometimes even at inflated prices. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas, to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. In order to achieve this result, it is imperative that we work together with provincial and territorial governments, learning institutions, and other education stakeholders so we can ensure international students are set up for success in Canada. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them, and they will not like the bluntness of the instruments that we use. Our aim is to strike the right balance between welcoming international students and making sure they have all they have and all they need to thrive. I will communicate more on this in due course, but for today, I'm here to announce a few more immediate measures. International students need to be prepared for life in Canada, and we have a responsibility to make certain that they are well supported when they come to Canada. Starting on January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned in French. Moving to a more accurate cost of living level that helps international students arrive with necessary resources to live and study in Canada. Future increases will be tied to the low income cutoff that Statistics Canada publishes every year, similar to other immigration programs. This cutoff conveys the income below which an individual may be in strained circumstances as they have to spend a greater than average proportion of their income on necessities. Recognizing that students already have to show that they can cover their tuition as well as other travel costs, their cost of living threshold is set at 75% of the low income cutoff rather than 100%, and puts us on par with our competitor countries. So next year we intend to implement targeted pilots that will test new ideas aimed at helping underrepresented cohorts of international students to pursue their studies in Canada. And we also plan to work with institutions, provinces, and territories to provide students with what they need to succeed. And I will have more to say on this a little earlier on in 2024. I'd also like to update you on 3 temporary policies affecting international students that were set to expire by the end of the year. The main purpose for an international student to be in Canada is to study. However, since most students are currently halfway through their school year and some are working full-time to meet their needs, we will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. We're currently examining options for this policy in the future, but we know that 40 hours a week is untenable if you're a student, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week while class is in session. Our data shows us that 80% of international students or more work more than 20 hours a week. And finally, in response to the labor market disruptions over the pandemic, we introduced a temporary policy granting post-graduation work permit holders an additional 18-month open work permit if needed. Those with a post-graduate work permit expiring by the end of this year remain eligible to apply, and we won't be extending that policy after that. Protecting and supporting international students from becoming vulnerable, whether that's to bad actors or simply meeting their needs in Canada, is one of the main goals of our review of the international student program. These students contribute to boosting Canada's economy. Taking these additional steps today contributes to our long-term goal, which is to preserve the integrity of the international student program. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया